What's up guys, it's Ashmita here and welcome back to my YouTube channel. So today we are heading to a hidden place which is Baheya Waterfall, and it is at Unported, Ranchi, and it is 20 or 22 kilometers far from Ranchi city, and we have almost reached here. And we left Ranchi at 12 p.m. and now it's 1 p.m. You can see the way guys, it's around like 0.5 kilometers from here, and yeah, stay tuned, we have something special for you guys and see what we have for you guys. So yeah, let's go. बाह्या फॉल के रास्ते आगे हैं क्या? It's been 6 years. मैं रांची में रहती हूँ. I wonder ये कौन सी प्लेस है जिसे मैंने अब तक जाना नहीं. But today I'm finally going to explore and search it out. Have you ever felt the calm? Nature is all about calm, peace of mind, and stress reliever. Here's the vibe is so peaceful. मैं यहाँ हर उस जगह पर रुकना चाहती थी, टाइम स्पेंड करना चाहती थी, but हमें आगे भी जाना था, so we could manage our time. Apart from it, we took multiple shots, so we won't miss out any of it. Yeah guys, we are walking downstairs. वो तो एक छोटा सा दिख रहा है फॉल, वो नहीं है एक्चुअल में, दूसरा है ना. वाओ, देखो ना कितना अच्छा व्यू है, देखो ना, लुक, इट्स सो अमेजिंग. हर तरफ ग्रीन ग्रीन माउंटेन्स, ट्रीज, कितना अच्छा लग रहा है. बस वेदर साथ दे दे, धूप नहीं होना चाहिए, से क्लाउडी वेदर रहेगा तो अच्छा रहेगा. तो एवरीवेयर, मतलब चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है ये प्लेस, और पूरी तरह से ग्रीनरी है. और फिर हम जा रहे हैं इस कच्चे रास्ते पे. कितने दूर हमें चल के जाना होगा? आई थिंक हमको लगता है 10 मिनट्स जाना होगा वॉक करके.
यहाँ से जो पानी जा रहा है ना, ये पानी उसी साइड जाता होगा और फिर हम नीचे साइड इसके ऑपोजिट साइड जाएंगे उस तरफ। पर रास्ता किस साइड है? चलो वो लोकल से पूछते हैं। यहाँ पे भी धान मिल गया। आई थिंक यही पानी उस साइड जाता होगा और उसी को फॉल, बहया फॉल ऐसा नाम दे दिया। मतलब विलेज के नाम है ना बहया, इसी वजह से बहया फॉल रख दिया गया। इसलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको फॉल की तरफ। लेट्स गो। और हम यहाँ गलत रास्ते पर चले गए थे, बट कोई नहीं। यहाँ से जो व्यू थी, that was totally worth it. But let me tell you, there's something special about this place. Have you ever felt like you have a long way to go? Then this is for you. Accept the present situation and trust God's plan for you. You should definitely take out time and visit here. Baheya Waterfall. Behind me is the Baheya Waterfall and look how amazing it is. और हमें ये 10 minutes का ट्रैक लगा आने में, यहाँ तक पहुँचने में। And yeah guys, this is not चुर्नी फॉल, एंड चुर्नी फॉल की जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप पे लिंक दे दूंगी, आप वो ज़रूर से देखना और डू विजिट दिस प्लेस एंड यू कैन सी गाइस इट्स सो अमेजिंग। और यहाँ पे चारों तरफ से मतलब पहाड़ है, माउंटेन्स के बीच में ये फॉल है और ये काफ़ी प्रिटी बना रहे हैं इसे, इस व्यू को। कैसा दिख रहा है? Look how cool this fall is. Wow, I'm loving this so much. Seriously, I love this. काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। अच्छा है, ये भी फॉल कभी फेमस हो जाएगी, धीरे धीरे वायरल हो रही है। मतलब इंस्टा में देखी थी मैं ये प्लेस को, ये वायरल हो रही थी उस टाइम पे। प्लेस फ़ोटोशूट के लिए काफ़ी प्यारा है, इस वजह से सब यहाँ पे फ़ोटोशूट वीडियोस वगैरह वगैरह सब कर रहे हैं।
फीट ऊपर होगा, 100 फीट में भी ऐसा कुछ होगा। और let's show this to you guys. This place is unbelievable, but it's true. मैं इसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सबसे छोटा फॉल है और इससे पहले वो बड़ा वाला फॉल है। Enjoyed this video, give this video a like, share and turn on the post notification bell so that you get notified every single time I post something new. See you guys in the next vlog. Peace! Never lose hope, take a break and restart with full energy.